Hello everyone and welcome to the SBI Securities Weekly Wrap podcast. So first, let's discuss how the markets have been in the week gone by. Indian benchmark indices during the week witnessed a much awaited rebound as frontline indices along with broader markets ended on a strong note. For the week, Nifty 50, Nifty Mid Cap and Nifty 500 were up by 1.9%, 3.4% and 2.8% week on week. All the sectoral indices managed to end higher with metal, power, cap goods, oil and gas ending with week-on-week gains of 7.9%, 6.8%, 6.6% and 5.6% respectively, while Bankex and IT were the least gainers registering week-on-week gains of 1.2% and 1.4% respectively. Metal index was the biggest outperformer, buoyed by decline in dollar index and China's decision to cut steel production. For the week, FI's net sold equities worth rupees 25,247 crores, while DI's net bought rupees 20,951 crores in the cash market. The recovery was despite weak global cues amid rising threat of tariff wars on multiple trading partners. Growth concerns in US on back of higher tariff and disruption in supply chains led to a sharp decline in US equities, dollar index and US 10-year treasury yield. Brent crude prices dropped to 6-month low owing to production increase decision by OPEC Plus as well as growth concern in US. Drop in dollar index to 104, US 10-year treasury yield to 4.2% and crude oil prices to below $70 per barrel are positive signs for the Indian equity market. ECB in its recent policy meeting has further eased the policy rate by 25 basis points 6 times since June 24 to 2.5%. While Germany's decision to spend €500 billion on defense and infrastructure boosted the investment sentiments in Europe. In domestic market, RBI's liquidity boosting measures through OMO and dollar-rupee swap brought some respite in the financial market amid tightening liquidity owing to continued intervention by RBI in the forex market and tax outflows. Talking about the aspects to look out for next week, so next week will be a truncated one owing to holiday on Friday due to Holi. We expect global cues along with inflation data from US and India to be closely tracked and to drive the overall investor sentiment. Additionally, non-farm payroll data from US and further development on the tariff front will also be closely watched. We remain cautiously optimistic on the market due to recent recovery and valuation easing. Large cap quality stocks are preferable over small cap stocks. Now moving on to the corporate developments. So first we have is Grasim Industries. So इस कंपनी ने अपना कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है at its Birla Opus Paints plant in Mahad, Maharashtra. With the commencement of the Mahad plant, out of 6 greenfield, this was the 5th plant for Birla Opus having started the commercial production, taking the total capacity to 1096 MLPA. So Grasim Industries focus में रहेंगे, positive for the company in long term. इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, सो इस कंपनी की मंथली इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडेड वॉल्यूम करीब 9,622 मिलियन यूनिट्स रही, जो कि अब थी 9% YOY. फर्दर द नंबर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स ट्रेडेड ग्रू बाय 167% YOY टू 16.4 लाख. सो पॉजिटिव फॉर IEX इन लॉन्ग टर्म. फोर्स मोटर, इस कंपनी की टोटल सेल्स करीब 46.3% YOY ग्रू हुई टू 3,600 व्हीकल्स इन Feb 25. डोमेस्टिक सेल्स करीब 48.8% से राइज हुई YOY टू 3,521 व्हीकल्स, जहां इंटरनेशनल सेल्स डिक्लाइन हुई 6.8% YOY टू 79 व्हीकल्स. सो ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स डिक्लेयर्ड बाय फोर्स मोटर्स, पॉजिटिव फॉर द कंपनी इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म. अडानी विल्मर, सो इस कंपनी ने एक डेफिनेटिव अग्रीमेंट इंक किया है विद GD फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड to acquire the ownership of household cooking brand Tops. So positive for Adani Wilmar in long term. Galaxy Surfactants, so इस कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन में एंटर किया है via its group companies with one of its global customer to provide engineering, procurement and construction service for their performance surfactants and specialty ingredient plant at an overseas location. So Galaxy Surfactants focus में रहेंगे, positive for the company in long term. Omax,
सो इस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है टू मॉडर्नाइज 6 की बस टर्मिनल्स फ्रॉम यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अंडर द पीपीपी मॉडल फॉर इस ब्रांड बी टुगेदर। यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 2700 करोड़ का रहेगा और इस इन्वेस्टमेंट के द्वारा करीब 4700 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट होएगी। सो पॉजिटिव फॉर ओमैक्स इन लॉन्ग टर्म। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज को ऑर्डर इनफ्लोज प्राप्त हुए ये हफ्ते में। सो टॉकिंग अबाउट द की कंपनीज, सो फर्स्ट वी हैव इस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ कंपनी को 577 करोड़ का ऑर्डर मिला। दूसरा है सोलार इंडस्ट्रीज, जहाँ कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 239 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है। फिर चलते हैं सुजलॉन एनर्जी पे, जहाँ जिंदाल रिन्यूएबल्स ने करीब 205 मेगावाट्स का ऑर्डर दिया है। देन इज जी वर्नोवा T&D इंडिया, जहाँ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने इस कंपनी को 500 करोड़ का ऑर्डर दिया है। आइनॉक्स विंड, सो द कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर वर्थ 153 मेगावाट। मूविंग ऑन टू कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, जहाँ इस कंपनी को 2306 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है। अब चलते हैं हमारे प्रोडक्ट पे जिसका नाम है पिक ऑफ द वीक, जहाँ हमने एक बाय कॉल दिया है अंबर एंटरप्राइजेस पे एट अ CMP ऑफ ₹6,232 और उसका टारगेट प्राइस है 6,980, जो कि अपसाइड पोटेंशियल है 12% का। देन मूविंग ऑन टू दी कॉर्पोरेट एक्शन फॉर नेक्स्ट वीक। सो फॉर की कॉर्पोरेट एक्शंस इन नेक्स्ट वीक, kindly refer to our weekly wrap report. The link to view the report is shared in the description box below. So this was all about our weekly market podcast. Thank you for listening. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.